डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने बात की थी होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ होमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन, हम क्या क्या इसकी मदद से क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ दिस टेक्निक इज हेल्पफुल इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कशन की थी। आज के हम अपने टॉपिक में सिलेक्ट करेंगे जीनोम सीक्वेंस एनोटेशन। व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंस एनोटेशन? तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से जीन और ORF, ये दो चीज़ें आपको पढ़नी है कि व्हाट इज़ जीन एंड व्हाट इज़ ORF। ओके, तो पहले हम समझेंगे कि जीनोम क्या होता है, एनोटेशन का मतलब क्या है, और फिर हम जीन और ORF के बारे में समझेंगे आज के लेक्चर में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ जीनोम? व्हाट इज़ जीनोम? जीनोम की अगर हम डेफिनेशन दें, इट्स द फील्ड ऑफ ओमिक्स। ओमिक्स, कई टाइप के ओमिक्स हैं, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स एंड metabolomics. Lots of omics studies are there. So what is genome? Genome is a complete set of genes. Complete set of genes. हमारी बॉडी में या हमारे DNA में जितने भी जो जीन्स हैं, उन जीन्स की complete study is known as genome. Okay. So genome is a complete set of genes. Whatever the number of genes, there must be 100 or 1,000 or 1 lakh, doesn't matter. Complete study of all the genes is known as genome. Sorry, all the group of all the genes is known as genome, and study of genome is known as genomics. Okay, so we are not going in deal with the genomics. Genomics is a very broad area where we identify. अगर हम आपको बेसिक जीनोमिक्स का थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि व्हाट इज जीनोमिक्स इज, सो जीनोमिक्स में हम क्या कर सकते हैं, वी हैव ए complete DNA sequence, and from this DNA sequence we can find out the genes, and from these genes we can find out the coding genes, and from here the proteins and the functions. These things we can study from this process. Okay, so this is the widely used techniques nowadays when NGS comes, next generation sequencing. हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में. ओके, सो दिस इज जीनोम. होप आपको समझ में आ गया होगा जीनोम क्या है. जीनोम इज ए कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द स्पीशीज. ओके, नाउ कम टू द एनोटेशन. व्हाट इज एनोटेशन? इट्स ए bioinformatic term. Okay. Means suppose you have a sequence. What is the feature of this sequence? What are the features of this sequence? Okay, what are the features of this sequence? So the identification or prediction of these features is the process. अगर हम डेफिनेशन के टर्म में आपको बताएं कि द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिडिक्ट और आइडेंटिफाई द फीचर्स प्रेजेंट इन एनी DNA, RNA or protein sequence is known. So the process of sequence is known as annotation. So this is annotation. What? So hope आपको समझ में आ गया होगा what is genome sequence annotation. So genome sequence means you have a set of genes, like
there is a one gene, 1, 2, 3, 4. There is a 4 gene. Identifying the features of these genes is known as, technique of identification of these genes is known as annotation. And this is genome, complete set of genes, and taking the features out from this genome is known as a annotation. So that is complete genome sequence annotation. ओके, अगर कोई आपको डाउट हो यहाँ पे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज ORF. अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, अभी हम बस जीन के बारे में बता दें. जीन इज ए सेगमेंट ऑफ DNA. It is a segment of DNA. What is ORF? It is open reading frame. क्या होता है हम आपको भी डिटेल में बताएंगे, पहले हम समझे जीन क्या होता है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. लुक इनटू दिस डायग्राम. ओके, जस्ट हम कलर पेन का चेंज कर लें. सॉरी, this is the complete gene structure. See, here it's DNA. Forget about this image for time being. Okay, you just concentrate here. This is DNA. It's a pre-RNA, mature mRNA, and protein. Before I'll talk about all these things, you just understand little basics about molecular biology. See, everyone must heard this term, central dogma of biology. What happens in this? DNA makes its own copy, and the term is known as replication. Then DNA to mRNA, and the process is known as transcription. mRNA can make DNA, and the process is known as reverse transcription. mRNA makes protein, and the term known as translation. Okay, so these are the very basic of molecular biology or biology. Every student must have aware about this. Very shortly I will make a video, very friendly video. Everyone can understand what is this central dogma. If you have any doubt, have some patience. I will surely come with this wonderful video of this. Okay, so replication में DNA अपनी खुद की कॉपी बनाता है. Like there is a double stranded DNA, it becomes single stranded, and now they make double strand. So one DNA makes become two. DNA से mRNA means this DNA makes a single stranded mRNA. And how you identify it as mRNA? There must be a poly A tail. And this mRNA transcript make the proteins. So means this mRNA, and there is a transfer RNA which transfer the information of this messenger RNA to the rRNA, and this rRNA synthesize protein on the RER, rough endoplasmic reticulum. So protein synthesis कहाँ पे होती है? RER पे. Okay, there is a one another, that is SER, smooth endoplasmic reticulum. इस पे की synthesis होती है lipid की. These are the very basic thing you must know about it. Okay, now come to the next. Now look into this diagram. So here we have a DNA, and the process with the transcription, there is a formation of pre-mRNA. What is the difference between pre-mRNA and mature mRNA is, you can see here. First you see the DNA. What are these parts are? So this red color you are seeing here, this is known as exon.
exon. And this gray color they are showing, they are like, okay, not visible, okay, they are introns. So introns are the non-coding part, okay, and exons are the coding part. So non-coding means they are non-functional, and coding means they are functional. अगर आपको याद रखने में दिक्कत है तो बस याद रख लीजिए ई एक्सॉन, ई के बाद आता है एफ, ए बी सी डी ई एफ, and F means function. So exon is a functional. Okay, so this is exon and introns. Exon and introns. Here it is a start and here it is a stop. Means 5 dash direction. Color, no problem. Just a second. Actually, so this start means start, जहाँ से process start हो रहा है. Stop means where the process is going to stop. Okay, there is a codons. Okay, three letter code. Like if it is DNA, that is ATG. If it is RNA, it becomes as a AUG. So T get replaced with U. So that is start. This is 5 dash UTR and this is 3 dash UTR. What is UTR? UTR stand for untranslated region. होता क्या है जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, so there must be some codons. There is a responsibility of some codons, okay, which are going to code. So start, जैसा भी आप यहाँ पे देखेंगे, ये तो ट्रांसक्रिप्शन है, मीन्स RNA का प्रोसेस हो रहा है. ट्रांसलेशन में आप देखेंगे देयर इज ए कोडॉन AUG. AUG इज ए स्टार्ट कोडॉन. अगर प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू होगी तो वो यहीं से होगी, दैट इज AUG. एंड AUG इज कोड्स फॉर M, मीन्स मीथियोनाइन. You will find there are most of the protein they start with the M. So the reason is the process begin with start codon is AUG, and the process get end at stop codon. So stop codon is UAG, UAG, UGA and AUU, no sorry, UAG, UGA and UAA. I'm not sure. Okay. So these are the stop codon. As soon as they will come into the sequence, the process will get terminated. So उसके बाद का भी कुछ sequence रहता है जो translated नहीं हो, जिसका translation नहीं हो पाता है. If it is on the 5 prime, so that is known as 5 dash UTR, or if it is at the 3 prime, then it is known as 3 prime UTR. There is a regulatory sequence, promoter. Promoter regions are the region which promote the process. If they will not come and bind over here, the process will not begin. And there is an enhancer and silencer. They are the regulatory sequence. They regulate the process. Okay, so that is complete. Now this process is transcription. Now you have a pre-RNA. Pre-RNA contains both exons and introns. See here, exons and introns. But your mature mRNA, after post-translational transcription modification, you see here all the introns are removed. And there is only and only exon part is present. And there is a poly A tail.
poly A tails defines the stoppage of transcription process, like your RNA synthesis has been over. कलर बहुत इशू हो रहा है. It's not fine. So poly A tail means RNA की synthesis पूरी हो गई. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन. यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा पड़ी हुई है, हम आपको क्लियर स्लाइड पे दिखाते हैं, जो अभी मुबारक पे बाद में आएंगे. सो ए जीन, अगर हम एक जीन की बात करें, सो दिस इज ए डीएनए सीक्वेंस. इट कंटेन्स, दैट इज 5 प्राइम एंड दैट इज 3 प्राइम एंड. दिस इज E1, E2 and E3, and this part is known as I1, I2. So when it is E1, E2 and sorry, E1, E1, I1, E2, I2, E3, and then E1, E2 and E3, 3 dash, 5 dash. So this is post-translational modification. Sorry, post-transcriptional modification. So now this gene is ready to code. Now this is ready to code. Now this gene will code for a protein. So now what it will do is, अब ये जीन क्या करेगा, ये एक अमीनो एसिड की चेन बनाएगा. Means your sequence. It is not going to give you a 3-dimensional structure. Okay, so it will make a amino acid chain. And this amino acid chain, after the post translational modification, बहुत टाइप के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं. इट विल गिव यू ए 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ ए protein, and this protein is functional. It will perform some function. It will provide some function. Function को हम f(x) के फॉर्म में लिखते हैं. Okay, so this is function. तो एक लाइन में अगर हम आपको समझाएं what is genome sequence and annotation is, so genome sequence annotation. So what is this? We have a gene. So हम इससे पता क्या लगाने जा रहे हैं, हमारे पास एक जीन है, मीन्स we have a sequence first of all, and this DNA sequence contains lots of gene. So what a gene performs, okay, what is the function of this gene that we can identify, what is the structure of this gene we can identify. Okay, so this is the advantage of genome sequence annotation. Nowadays there is a machine learning algorithms are there, AI methods are there. So this process has become more user friendly or more faster. This process has become, बहुत जल्दी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, और क्या कहना चाहिए, बहुत कुछ डिटेल आप निकाल सकते हैं इससे. डेटा एनालिसिस टूल्स आर देयर, आर प्रोग्रामिंग इज देयर. आप एक साथ में पूरे जीनोम को स्टडी कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट द जीनोम. ओके, नाउ कम टू द ORF. सो व्हाट इज ORF? ORF इज ओपन रीडिंग फ्रेम. एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारा mRNA जब हमारा mRNA जो है, नाउ दिस ट्रांसक्रिप्ट मीन्स आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, PTM, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, हमारा mRNA जो है, इट्स नाउ रेडी फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. Now it's ready for synthesis of protein. Okay, sorry, it will not make
protein structure, now it will start synthesis amino acid chain. So now these every amino acid will come and binding come and binding like this, and it's all make complete amino acid chain. So हमारा जो प्रोटीन सीक्वेंस है, प्रोटीन हमारा जो प्रोटीन सीक्वेंस है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे पूरी हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोला, दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। एंड उसके बाद ये प्रोटीन की से अमीनो एसिड की सिंथेसिस करेगा, दिस अमीनो एसिड चेन की, एंड यहाँ पे सिंथेसिस के बाद ये बनाएगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे हमने जीन के में बताया। तो ORF का क्या काम है? ORF इज नथिंग बट, बहुत सी जगह पे गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ORF के बारे में, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम, ओके, एंड दिस इज स्टार्ट कोडॉन, this is stop codon, this is start codon, and this is stop codon. So the sequence which is lies in between this, which is ready for the translation, जिसका की ट्रांसलेशन होगा, मीन्स जिससे अमीनो एसिड सीक्वेंसेस बनेंगे और ये अमीनो एसिड सीक्वेंस एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस पार्ट इज नोन एज ORF, दिस पार्ट इज नोन एज ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम। दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। मीन्स आपका जो कोडॉन होता है वो 3 लेटर कोड में लिखा जाता है, सपोज सॉरी टी नहीं आएगा, AUGCAUGGAUUAC, like that. So AUG is a start codon, is very good for methionine. Now this is UGC is one codon and GCA is a third codon. Now so this is 3 frame, 3 forward frame, and 3 CAU, AUU, UAC. So sorry, CAU, AUU, UUA. So these are the 3 backward frame। 3 के फॉर्म में ही क्यों पढ़ते हैं आप देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, हमारा ये पूरा हो गया। नाउ दिस विल स्टार्ट अगेन, CAU, ACC, ACA, CAU, so like that it's open reading frame। तो ORF में कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी। ORF सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस जो स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन का जो बीच का जो सीक्वेंस है जो कि ट्रांसलेट होगा इसमें, प्रोटीन में, that is known as open reading frame, means a frame which is open to by reading। कौन रीड करेगा? राइबोसोम्स। कौन सा? rRNA, means rRNA, rRNA will read this and make it as a amino acid। So synthesis of amino acid in the ribosome in the RER, intraendoplasmic reticulum पे। So that is open reading frame, a frame which is open for the reading and by this it will get converted into protein। आज के लिए इतना ही, हम आज के लेक्चर को समराइज कर दें। सो हमने जानने की कोशिश करी जीनोम सीक्वेंस एनोटेशन, हमने इसमें जाना व्हाट इज़ जीन, हमने इसमें जाना व्हाट इज़ ORF, एक जीन से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की। ORF का क्या काम है, कितने फ्रेम कितने टाइप का होता है, दीज आर द थिंग्स वी कैन आइडेंटिफाई। एक चीज़ और बताएं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस, हाउ वी आइडेंटिफाई दिस। तो ORF के लिए आप NCBI पे जाइए, देयर इज ए टूल ORF फाइंडर, ORF फाइंडर, इस टूल की मदद से आप ORF फाइंड कर सकते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, ओके, मींस mRNA सीक्वेंस में, ओके, सो दैट इज किसी भी RNA सीक्वेंस में।
जीन के लिए वही आप कोई डीएनए सीक्वेंस लें या आप कोई जीनोम ले लें, देयर इज एन नंबर ऑफ जीनोम्स अवेलेबल इन एनसीबीआई। आप वहाँ से कोई जीनोम लें और उसकी जीनोम स्टडी करें। और आप जीन के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हो सो देयर इज ए जीनोम होम रेफरेंस करके एक साइट है, आप इस साइट पे विजिट करें www.genomehomereference.com। इस पे आप जाएं सो यू विल गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट जीन्स। थैंक यू। सो आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको कोई भी नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। आप इसको देखिए, कोई भी आपके डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और अगर आप कुछ अलग से कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हो उनको भी आप हमको बताइए। थैंक यू।